सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8B का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 8B ये भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है एंड वेटेज है 7 मार्क्स का। वेटेज है 7 मार्क्स का, राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर लिख कर रखा हूँ पूरे अच्छे से सिंपल वे में। एंड जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, जैसे कि इशू इन्वॉल्व प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस या कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, एंड क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करते हैं, एंड फाइनल क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंगली मैंने भी यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, राइट। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। EE Private Limited is engaged in distribution of computer software and hardware, and it obtained copyright software from foreign companies and sold the same to its customer, and no value addition was made. The software were ready-to-use softwares. Also, it obtained computers in which softwares were affixed as an integrated unit. Then in the assessment, the amount paid for purchase of software was subjected to disallowance since no tax was deducted at source on the payment made to foreign companies supplying ready-to-use softwares. The company wants to know the correct legal position, also wants to know the clarity as regards hardware purchased and software affixed therein. You are the tax consultant for EE Private Limited and you are requested to give your opinion in this regard, right? तो ये है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर पूरे अच्छे से लिख कर रखा हूँ। सो सी हियर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको पहले हेडिंग लिखना है। चाहे जैसा भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो, हमको पहले हेडिंग लिखना है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ, व्हेदर द इम्प्यून पेमेंट इज रॉयल्टी एंड लायबल फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, व्हेदर द इम्प्यून पेमेंट is royalty and liable for tax deducted at source. Then क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इशू क्या होना चाहिए वो मेंशन किया हूँ, कौन सा इशू इन्वॉल्व है। और मैंने फिर लिखा हूँ कि द कंपनी इज परचेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर रीसेल इन इंडिया एंड बाइंग हार्डवेयर विथ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, एंड द क्वेश्चन इज whether such payment are considered royalty and therefore require tax declared source under section 195. ये है इशू। एंड कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, तो या फिर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। तो मैंने ऑलरेडी इशू इन्वॉल्व के अंदर लिख कर रखा हूँ सेक्शन 195। तो हियर ऑल्सो सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अप्लाइज ओनली इफ द पेमेंट टू ए नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो ये जो सेक्शन 195 है ये अप्लाई होगा तब जब पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हो रहा है। TDS अप्लाई ओनली अगर पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हो रहा है एंड टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। एंड अगेन एक्सप्लेनेशन 2B टू सेक्शन 91VI के अकॉर्डिंग रॉयल्टी के अंदर इंक्लूड होता है कोई राइट्स या फिर ग्रांटिंग ए लाइसेंस इन एनी कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। रॉयल्टी के अंदर जो पेमेंट इंक्लूड होता है वो होता है राइट्स या फिर ग्रांटिंग ए लाइसेंस इन एनी कॉपीराइट, लिटरेरी,
artistic or scientific work, right? And again explanation 4 to section 9 1VI के अंदर मेंशन किया गया है, if someone is given the right to use or exchange software rights, then it is considered royalty. Then it is simply considered royalty. But here क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा. अगेन सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT means Commissioner of Income Tax in 2021 432 ITR 1 सुप्रीम कोर्ट के केस में रूल्ड दैट certain software transaction do not amount to royalty. कौन सा ट्रांजेक्शन? फर्स्ट, if an end user in India buys software directly from foreign company, अगर कोई एंड यूजर है इंडिया के अंदर जो कि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बाय कर रहा है फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी. एंड सेकेंड, if Indian distributors buy software from foreign company and then resell it to Indian users, यहाँ पर भी रॉयल्टी कहा नहीं जाएगा. अगर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर ने सॉफ्टवेयर बाय कर रहा है फ्रॉम फॉरेन कंपनी एंड देन रीसेल इट टू इंडियन यूजर्स, राइट. एंड थर्ड कंडीशन क्या है? इफ फॉरेन वेंडर्स बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स and then sell it to Indian distributors or users, right. And fourth case में if software comes pre-installed, अगर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल के साथ आ गया है in hardware and is sold as a single unit, in that case also this is not known as royalty, right. So in these cases the buyer is not receiving copyrights, buyer कोई copyrights receive नहीं कर रहा है, but just a copyright of the software, a copyrighted article for personal or resale use, either personal या फिर resale use. So here हमको क्या पता चला? फाइनली कंक्लूजन में पेमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर परचेजेस और प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर आर नॉट कंसिडर्ड रॉयल्टी. अगर सॉफ्टवेयर परचेज के लिए जो पेमेंट दिया जा रहा है और प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आया है इन हार्डवेयर आर नॉट कंसिडर्ड ए रॉयल्टी. And since these payments do not involve copyright transfer के लिए ये पेमेंट नहीं हुआ है, then they are not subject to tax deducted at source under section 195. They are not subject to tax deducted at source under section 195. So therefore EE Private Limited does not need to deduct TDS as it is only buying and selling copyrighted articles, not granting copyright rights, right. So finally EE Private Limited does not need to deduct tax deducted at source as it is only buying and selling copyrighted articles but not granting any copyright का rights, right. तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूरे सिंपल वे में प्रेजेंट किया हूँ. पहले हेडिंग लिखा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, whether the impugned payment is royalty and liable for tax deducted at source. Then मेंशन किया हूँ कि इशू क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर इशू क्या है. देन मैंने मेंशन किया हूँ
the company is purchasing software for resale in India and buying hardware with pre-installed software. And question is whether such payment are considered royalty. क्या वो जो पेमेंट हो रहा है क्या वो रॉयल्टी है and therefore required tax deduction under section 195. देन प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होगा, प्रोविजन कौन सा प्रोविजन से एप्लीकेबल होगा या कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा. तो इशू इन्वॉल्व के केस में ऑलरेडी सेक्शन 195 मैंने मेंशन किया हूं. तो सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉन रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है एंड दैट ओनली टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर, ये है सेक्शन 195 का प्रोविजन. एंड अगेन एक्सप्लेनेशन 2B टू सेक्शन 91VI के अंदर पूरे अच्छे से मेंशन किया गया है. अगर कोई रॉयल्टी है, रॉयल्टी इंक्लूड्स पेमेंट फॉर ट्रांसफरिंग राइट्स और ग्रांटिंग ए लाइसेंस in any copyright, literary, artistic or scientific work. And explanation 4 to section 91VI के according, if someone is given the right to use or transfer software rights, then it is considered as royalty, right? And then analysis of the issue. तो मैंने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड इशू को एनालिसिस किया. एक केस हुआ था द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT इन 2021 ईयर्स में 432 ITR 1 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सर्टन सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन डू नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी. कौन सा ट्रांजैक्शन? पहला, इफ एन एंड यूजर इन इंडिया बाय सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन कंपनी, and if Indian distributors buy software from foreign company and resell it to Indian users. Third, if foreign vendors buy software from foreign suppliers and sell it to Indian distributors or users. And fourth, if software comes pre-installed in hardware and is sold as a single unit. So ये 4 केस में buyer is not receiving copyrights but just a copy of the software, means a copyrighted article for personal use और या फिर रीसेल पर्पस, राइट. तो इसमें हमको क्या जानने को मिला कंक्लूजन में कि पेमेंट फॉर सॉफ्टवेयर परचेस और प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर आर नॉट कंसिडर्ड रॉयल्टी सिंस दिस पेमेंट डू नॉट इन्वॉल्व कॉपीराइट ट्रांसफर. इसमें कोई कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट ये एक रीसेल पर्पज के लिए किया गया है. सो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 195. सो अकॉर्डिंगली therefore EE प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट नीड टू डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स as it is only buying and selling copyright articles and not granting any type of copyright rights, right? तो ऐसे हमको आंसर को प्रेजेंट करना है सो दैट पूरे फुल टू फुल 7 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, राइट. सो एंड इसके साथ दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का जितने भी सारा क्वेश्चन था वो सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके मेंशन किया हूँ और अपलोड भी कर दिया हूँ. एंड इसके बाद जून 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का विथ अपडेटेड सजेस्टेड आंसर मैंने बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ. सो बट फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for your support. Thank you so much for your time and happy studying.